यस, सो एसिम्टोट्स का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल. फोकस करोगे तो जल्दी से समझ में आ जाएगा. ठीक है. सो द वेरी फर्स्ट असिम्टोट इज अ वर्टिकल असिम्टोट. वी हैव वर्टिकल असिम्टोट इन सिलेबस. ठीक है. सेकेंड, वी हैव हॉरिजॉन्टल असिम्टोट इन सिलेबस. एंड देर इज थर्ड टाइप ऑफ असिम्टोट दैट इज कॉल्ड एज ऑब्लिक असिम्टोट. ठीक है. ऑब्लिक या इट इज कॉल्ड एज स्लांट एज वेल. ठीक है. सो हाउ डू वी फाइंड असिम्टोट्स? So to find asymptote, vertical asymptote is found. Vertical asymptote is found अगर तुमको फंक्शन दिया है, लेट्स से f of x इक्वल्स टू 1 अपॉन लेट्स से q of x. ठीक है. यहां पे कोई एक फंक्शन दे दिया. वी विल टेक द एग्जांपल एज वेल. ओके. नाउ वर्टिकल asymptote is nothing but when your q of x is becoming 0, the value of x for which your denominator is becoming 0 is your vertical asymptote. मतलब क्या है इसका? So here you will have a very fixed value of x. x का वैल्यू फिक्स रहेगा, but your y का वैल्यूज will either be reaching positive infinity और negative infinity. See, ये बहुत मैथमेटिकल टर्म में मैंने यहां पे लिख दिया है. ठीक है. कितने लोगों को ये मैथमेटिकल टर्म समझ में आ रहा है? रेज योर हैंड्स. इसके बाद हम एग्जांपल देखने ही वाले हैं. ठीक है. ओके. मैथमेटिकल टर्म में मैंने क्या लिखा कि मेरा डिनोमिनेटर जिस वैल्यू के लिए 0 हो रहा है, दैट वैल्यू ऑफ x इज माय वर्टिकल एसिम्टोट. व्हाट हैपेंस एट वर्टिकल एसिम्टोट? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज बिहेवियर ऑफ द फंक्शन अराउंड इट्स एसिम्टोट्स. ठीक है. सो व्हेन x इज इक्वल्स टू k, मतलब x का एक फिक्स वैल्यू आएगा फॉर विच आइदर y विल बी गोइंग टू प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी. सो इसमें क्या होगा? सो लेट्स से आई एम ड्रॉइंग वन ग्राफ हियर. This is the vertical line. Okay. So इसका ग्राफ, let's say this line is x equals to 5. So graph can either be drawn like this or graph can either be drawn like this. ठीक है. Now if you look at the graph properly, x equals to 5. So इसको कंपेयर करो x equals to k के साथ. Right. So when x equals to 5 की मैं बात कर रहा हूं, so my graph on left hand side is either going to negative infinity. On right hand side of 5 it is going to positive infinity. That's why I have written graph will either go to plus infinity or go to minus infinity. Getting it or not? And when we write down the behavior of graph, what we write? So अभी ये जो 5 वैल्यू है, now this 5 वैल्यू, let's say मैं ये 5 वैल्यू के लेफ्ट में जा रहा हूं. If I'm going towards left, so इसको मैं just for this purpose कि मैं लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा हूं, I will write it as 5 minus. If I'm going towards right, I will write it as 5 power x. It means what? When x tends to 5 minus and x tends to 5 plus, this arrow is called as tends to. तो इसका मतलब क्या है? My value is going from one position to other. मतलब it is just beyond vertical asymptote. लेफ्ट में जा रहा है या राइट में जा रहा है? लेफ्ट में जा रहा है तो माइनस लेंगे, राइट में जा रहा है तो प्लस लेंगे. गेटिंग इट और नॉट? If it is going towards left, I'll take it 5 minus. If it is going towards right, I'll take it 5 plus. So when my graph is going towards 5 plus, when my graph is going 5 plus, my y is going towards positive infinity. So when we write down the behavior, how I will write it? I will write when x tends to 5 plus, y tends to positive infinity. This is the behavior of graph around vertical asymptote. Okay. Second, when x tends to 5 minus, y tends to negative infinity. This is the behavior of graph around vertical asymptote when it is going towards negative side. कितने लोगों को समझ में आया? Raise your hands. A very simple concept. ठीक है. बस इतना सा ही ध्यान देना है इसमें. For vertical asymptote, we have only this condition and nothing else. ठीक है. Now, if I give you any condition, if I give you any question, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? लेट्स से आई एम गिविंग यू क्वेश्चन y इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 x minus 10. Come on, give me what will be the vertical asymptote of this question. Tell me what will be the vertical asymptote for this question. So to find vertical asymptote we have only one condition. Quickly tell me what is the condition and give me the value of that. यस बोलो शान्यू, समायरा.
Yes. So to find vertical asymptote we have single condition, denominator equals to 0 and find for what value it is becoming 0. So 2x will be equals to 10, so x will be equals to 10 upon 2, that is 5. So my vertical asymptote is x is equals to 5. Getting it or not? Now without even sketching the graph, can I find the behavior? Yes, I can find the behavior. How will I find the behavior? Now you just imagine, take any number greater than 5. So it will be written as x tends to 5 plus. That is, I am taking any number greater than 5. Let's say if you take 10, check what value of y you get. If we are getting positive, then we will write y tends to positive infinity. Let's see. अगर मैं x का वैल्यू ग्रेटर देन 5 लेता हूं तो my answer will be positive. So I will write down y tends to positive infinity. If I take any number of x, any value of x less than 5, then I will check whether my answer is coming positive or negative. If my answer comes negative, then it means y tends to negative infinity. अगर यहाँ पे मैं 0 लेता हूँ, so my answer will come negative. It means y tends to negative infinity. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिनको समझ में आ रहा है, please raise your hands. Those who are getting it? Yes. Yes, so it becomes negative means what? I'll put it in this equation and I'll check कि क्या आंसर आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है. So when I take x का वैल्यू लेस देन 5, I will take it 0 because 0 is always simpler number to simplify. तो ये खत्म हो जाएगा. तो यहाँ पे बचेगा 3 upon minus 10, that is negative. That's why my behavior of asymptote is negative. Getting it or not? समझ रहा? ओके, सबको समझ में आ गया, ठीक है. सो दिस इज वर्टिकल एसिम्प्टोट. हाउ डू वी फाइंड द वर्टिकल एसिम्प्टोट एंड बिहेवियर ऑफ ग्राफ अराउंड वर्टिकल एसिम्प्टोट. वी अंडरस्टूड 3 थिंग्स. सो इसको क्विकली समराइज कर लो कि व्हाट आर द पॉसिबल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एसिम्प्टोट्स दैट माइट बी आस्क्ड. सो सबसे पहला कि फाइंड वर्टिकल एसिम्प्टोट. हाउ डू वी फाइंड वर्टिकल एसिम्प्टोट? वी अंडरस्टूड. सेकेंड क्या बोला मैंने अभी जस्ट? फाइंड वर्टिकल एसिम्प्टोट. बिहेवियर एंड कैसे निकालते हैं हम वर्टिकल एसिम्प्टोट? वी फाइंड वर्टिकल एसिम्प्टोट बाय टेकिंग डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0. ओके, एंड वर्टिकल एसिम्प्टोट इज ऑलवेज रिटर्न in x equals to k form. K is any constant number. Getting it or not? ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ गया. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट. यस, yes, behavior means what? Let's say you have got x का value equals to k. So when you put x tends to k plus, मतलब when you are moving from k to positive side of the k, your y will either be plus or minus infinity. Yes or no? If you get positive answer, it will be plus infinity. Let's say if you are moving from x tends to k minus, yani you are moving left to the k, and if your answer comes negative, then it will be minus infinity. If it comes positive, then it will be plus infinity. So this is the behavior. Getting it? Yes. Okay. Now next one is important, that is horizontal asymptote. Horizontal asymptote. Now in horizontal asymptote we have 3 conditions. Horizontal asymptote में what we do, we always write y equals to c का form. ठीक है? Y equals to c means what? Whatever the graph we have, horizontal line is always the horizontal asymptote. That is written in y equals to c का form. ठीक है? Now here 3 conditions are possible, but to understand those 3 conditions, first we need to understand one term, that is degree of a polynomial. ठीक है? Degree of a polynomial. Okay? Now what is the meaning of degree of a polynomial? Degree of a polynomial का मतलब होता है कि let's say if I have given any polynomial, let's say I have given any polynomial, all 3 are polynomial here. ठीक है? The
हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज अ डिग्री. जैसे इन फर्स्ट केस द हाईएस्ट पावर इज 2, so degree of this polynomial is 2. In second case highest power is 3, so degree is 3. In third case highest power is 5, so degree is 5. Is this term understood or not? Those who have understood, raise your hands. Okay, now based on that degree, in horizontal asymptote we might have function in numerator, we might have function in denominator. ठीक है? So I am talking about degree. If degree of numerator is greater than denominator, if d for degree, ठीक है, degree of numerator is equals to degree of denominator, or if degree of numerator is less than denominator, there are three conditions. Okay, so in these three conditions you have to blindly follow them. You don't have to even do any other calculation for this. Okay, see, if numerator ka degree is greater than denominator, so there is no horizontal asymptote. There is what? There is no horizontal asymptote. ठीक है? If numerator का degree is less than denominator का degree, then there is horizontal asymptote, and that is y is equals to 0. Whenever numerator का degree is less than denominator का degree, horizontal asymptote is always y equals to 0. ठीक है? But when degrees of numerator and denominator are equal, then your horizontal asymptote is ratio of coefficient of numerator, coefficient of denominator का degree. ठीक है? coefficient of numerator and coefficient of denominator. इसका मतलब क्या है? Now let's take examples. यहां पे मैं example लिखता हूं. ठीक है? Let's say I'm writing x cube plus 2 upon x square minus 5x plus 1 या minus 1. Second example, let's say 2x square minus 10 upon 4x square plus 10 minus 2. Third example, x upon 2x square minus 10. So I have taken three examples here. In every condition, here the degree of the numerator is 3 and degree of the denominator is 2. So my numerator का degree is greater than denominator का degree, hence there is no horizontal asymptote. ठीक है? Here my degree of numerator is 2, my degree of denominator is also 2. So coefficient of these degrees, ठीक है? So here horizontal asymptote is 1 upon 2. Here highest power in numerator is 1, here highest power in denominator is 2. So denominator has the more degree than numerator, so numerator has lesser than denominator, so here horizontal asymptote will be y equals to 0. इतना सिंपल है, इतने से ही conditions है. Those who have understood, please raise your hands. Those who have understood, please raise your hands. I can't see anyone. समझ में आ गया? Now we will do few question based on this. ठीक है? एक दो क्वेश्चंस करते हैं. इसमें हमको हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट में, अगेन इन हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट देयर कम थ्री कंडीशंस. पहला तो तुमको हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए तीन कंडीशंस अपन ने सीख ली है. सेकंड, बिहेवियर कैसे लिखेंगे. ठीक है? हाउ विल यू राइट डाउन द बिहेवियर ऑफ हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट. सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट द बिहेवियर ऑफ हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट. हाउ इज द बिहेवियर. सो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट में क्या होता है, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, वेन एवर वी आर ड्रॉइंग एसिम्पटोट्स और वेन एवर ग्राफ्स आर गिवन, एसिम्पटोट्स आर ऑलवेज ड्रॉन विथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डैश्ड लाइन्स एंड नॉट द सॉलिड वंस. These lines does not represent asymptote, but these lines represent asymptote. ठीक है? So in horizontal asymptote what happens? In horizontal asymptote you have fixed value of y. You have fixed value of y. Okay, but
for that fixed value of y, your x is either going to positive infinity or it is either going to negative infinity. Getting it or not? How many of you getting this? It is completely ulta of what we have done in vertical asymptote. ठीक है? So we will do one thing, इसका behavior and sign diagrams we will do directly with the help of question. ठीक है? मैं क्वेश्चन फॉरवर्ड कर रहा हूं ग्रुप